Welcome friends. Today we are going to learn about structure of atmosphere. This is very important aspects of geography. We all should know about atmosphere, layer of atmospheres. Without spending any times, we will start our lecture. In this lecture, we will see layers of atmospheres, and in every layer some important phenomena happen. We will know about that phenomena. That will be more than sufficient for us for competitive exams or our regular school exams. There are four layers of atmosphere. First one is troposphere. Second one is stratosphere. Third one is mesosphere, and fourth one is thermosphere. Now we will see the extent of each layer from sea level. In graphical forms, we can represent it as first one is troposphere. It is bottommost layer of it. Above it, stratosphere. Then after, mesosphere, and topmost is thermosphere. अक्सर हम लोग भूल जाते हैं इसको याद करना, इसकी अलाइनमेंट क्या है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। आपको जान के थोड़ी हंसी भी आएगी, और जो थोड़े से 11-12 के स्टूडेंट्स हैं साइंस बैकग्राउंड से, वो शायद वो समझ पाएंगे। बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तेरे साथ में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तेरे साथ में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। टीआर तेरे, स्ट्रेटो साथ में, थर्मोडायनेमिक्स का थर्मो, तेरे साथ में ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ओके। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग एक अनदर फॉर्म में भी, मतलब दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दिस टू बॉटम मोस्ट, समटाइम इट ऑल्सो कॉल्ड होमोस्फेयर। ये ऊपर वाला मीजो के ऊपर वाला ये हेट्रोस्फेयर का है। समटाइम it is called heterospheres. Why it is homosphere? Because if you take any portion
from these two layers, you will find proportion of gases is same everywhere, but in these layers you will find layer of gases. This is because of gravity. The molecular mass of gases is different, due to which layers occur. Now one by one we will see each and every layer and it expand, and some important fauna within these layers. First one is troposphere. Its expand is from 0 kilometer to approximately 17 kilometer at equator, 0 degree latitude, and at poles it is expanded up to 9 kilometer. Why? The main reason is at equator less gravitational forces is less at equator because radius is more. High temperature because sun rays are perpendicular. And at pole gravitational force is also more, temperature is also high, temperature is low, due to which gases become dense and it comes closer to the earth's surface. Sometimes it also called zone of mixing, because all weather phenomena happens within this layer. One more important things in this troposphere is aeroplane flies either upper part of troposphere or lower part of a stratosphere. Should I write about its expand? Okay, I will write it. At equator expand up to 17 kilometer, at pole expand up to 9 kilometer. And now second layer, a stratosphere. It is expanded from 12 kilometer to
approximately 35 kilometers. It is also called ozonosphere क्योंकि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन इसी layers में होती है. Now why ozone is forming in this layer? Because sun rays are coming, and along sun rays ultraviolet rays is also coming. When these ultraviolet rays collides with oxygen, it breaks oxygen into nascent oxygen, and in the presence of ultraviolet rays, these nascent oxygen and oxygen molecules get together and make ozone gas. Now this ozone is playing vital role in human, or we can say that creatures on for existence of creature at earth, because ओजोन लेयर ये हानिकारक और हार्मफुल जितने भी सारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको सोख कर जाती हैं और हमें ख़तरनाक रेडिएशन से बचाती हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर वगैरह बीमारियां नहीं होती हैं. Nowadays this ozone layers depletion is happening with very high rate. Before first we see that at equator very thick ozone layer, वहीं at pole thin ozone layer. Why? Because sun rays are very dense at equator. But at pole sun rays are not so much dense, so its temperature is not increasing, or ultraviolet rays is not colliding much, due to which very less ozone layer formation is happening at. बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन और होल इन ओजोन लेयर्स, वी हियर दिस न्यूज़. सोचिए कहाँ पे ज़्यादा होगा ओजोन लेयर का डिप्लेशन. ये पोल पे ज़्यादा है ओजोन लेयर का डिप्लेशन. इसको अभी के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि इसको समझने के लिए यू नीड टू नो सम मोर कंसेप्ट्स, जो अभी के लेक्चर के लिए टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, तो वो किसी और लेक्चर में हम कर लेंगे. एट पोल होल्स इन ओजोन लेयर are increasing with higher rate. अब ये ओजोन लेयर्स का डिप्लेशन क्यों होता है? वी नो डैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए मेन रीजंस हैं. इसमें क्या होता है, फ्लोराइड डाइऑक्साइड निकलता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फ्लोराइड ऑक्साइड का फॉर्म करता है, जिससे ओजोन लेयर अब नहीं बन पाएंगे. ओजोन बन गया, बट ये ओजोन जो होता है फिर वो काफ़ी स्टेबल नहीं होता है. दिस इज़ नॉट मोर स्टेबल. दिस ओजोन again it breaks into nascent oxygen, and these nascent oxygens react with fluorine and again form
fluoride oxide. Then after this oxygen is not available for reaction and no more ozone formation is happening. Now we will see mesospheres. It is basically a transitionary layer between homosphere and heterospheres. Not much important phenomena happens in these layers. We can say that its expand is up to from 35 kilometer to 80 kilometer. Fourth one is thermosphere. This is important. It expands above 80 kilometer because sun rays are very dense and higher solar radiations. Due to higher solar radiations, ionization occurs and the layers of ions is forming. So we can say that one more important phenomenon happen is ionization. Due to high solar radiation, ionization occurs. Now दिन के टाइम पे सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये आयोनाइजेशंस ऑफ गैसेस जो हैं आयन में टूट जाती हैं. दे ब्रेक्स इनटू आयंस बट इन आफ्टर सनसेट इट डिसोसिएट्स. जो आयंस बनी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और लेयर्स ऑफ आयंस गेट डिसोसिएट्स. सो आयनोस्फीयर्स it exists within थर्मोस्फीयर. अब इसके भी कुछ लेयर्स होते हैं वो देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस उससे भी आ जाते हैं. बॉटम मोस्ट 80 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर. It is D layer. Then after up to 260 kilometer E layer. And up to 450 kilometer F layer. And between 450 kilometer to 600 kilometer G layer exists. Then after magnetosphere. Now in D layer में क्या होता है, E लेयर में क्या होता है, F लेयर में क्या होता है और G लेयर में क्या होता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. Why these layers are given different name, क्योंकि इनमें कुछ तो अलग हो रहा होगा. So we will see in D layers
low frequency wave get reflected to earth. Low frequency wave get reflected to earth, and also it dissociates after sunset. ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं. ई लेयर्स में क्या होता है? मिडिल मीडियम फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव रिफ्लेक्ट होती हैं और ऑल्सो डिसोसिएट्स आफ्टर सनसेट. Sometimes we know this E layer as name of Kennelly heaviside. This is a name of scientist. Now F layer. F layer में it reflects high frequency waves and partially dissociate after sunset. G layer, it does not dissociate. Sometimes F layer is called as Appleton layer. This is all about the structure of atmosphere. I think this is enough. अगर आप लोग इतना याद रख लें तो ये काफ़ी होगा. इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम्स में, you can be able to handle it. Thank you.